Motor neurons are, these are the nerves that innervates the muscle fibers, right? And motor unit is all the muscle fibers which are innervated by a single motor neuron. ठीक है? What is motor unit? All the muscle fibers which are innervated by the single motor neuron, right? Now, synapses कहाँ कहाँ होते हैं? It can be between neuron to neuron and between neuron and muscle. ठीक है? Synapses are the junctions where axon or the presynaptic, अभी हम आगे देखेंगे, presynaptic and postsynaptic. Synapse होता है, उसमें presynaptic membrane is there and postsynaptic membrane is there, and बीच में क्या होता है? There is synaptic cleft, right? So synapses are the junctions where axon or the presynaptic membrane or cell terminates on another neuron or muscle, or the postsynaptic cell or membrane, right? Functionally, synapses can be of two types: electric synapse and chemical synapse. Electric synapse where impulses traveled through gap junction. गैप जंक्शंस बताए थे मैंने. दीज आर गैप जंक्शंस. ये बिल्कुल अप्रोक्सीमेट होते हैं एक दूसरे के. ठीक है? जो डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस इज वेरी माइन्यूट. गैप जंक्शंस में डायरेक्ट होते हैं जहां. और नेक्स्ट वन इज केमिकल साइनेप्स वेयर न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज, है ना, and it gets attached to the postsynaptic receptors present on postsynaptic membrane or cell. So the neuromuscular junction is a type of chemical synapse where neurotransmitter is released from presynaptic membrane and acetylcholine receptors are present on the postsynaptic membrane where it gets attached. ठीक है? Now, come in. Neuromuscular junction is a which type of synapse is there? Chemical. ठीक है? Between axon, motor axon and muscle fiber, right? It is also known as myoneural junction. ठीक है? It consists of presynaptic membrane, which is of axonal terminal, synaptic cleft, and postsynaptic membrane, which is of muscle fiber. Now, presynaptic membrane, it is consist of axon of alpha motor neuron, right? बेटा ये गेट बंद करना. Here you can see these are teloglia, are modified Schwann cells. ठीक है? As axon approaches the muscle fiber, it loses its myelin sheath, right? And here it is insulated by teloglia. ठीक है? And it contains presynaptic, जो knob है, it contains a large number of mitochondria, which signifies it's a active site, right? And these are modified presynaptic membrane. These are dense zones where the vesicles docked. ठीक है? जब vesicles are formed, they are docked where? On the dark zone, which is a active zone. Come in. Present inside the presynaptic membrane, opposite to these folds. ठीक है? And these are
vesicles which contains acetylcholine. These are small and clear vesicles, right? ये डार्क जोन जो अभी मैंने बताया था, these are linear dark bar और dark zone, ठीक है, dense bar. And इनके साइड्स में क्या होता है, देयर इज कैल्शियम चैनल्स. जो डार्क जोन है या डार्क बार है, इट हैज कैल्शियम चैनल्स ऑन बोथ द साइड्स, राइट? व्हाई डू वी नीड कैल्शियम चैनल्स ऑन प्री-सिनेप्टिक मेम्ब्रेन? फॉर द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन. एक्सोसाइटोसिस में वी रिक्वायर कैल्शियम, राइट? Now, synaptic cleft. It is around 20 to 40 micrometers, right? It is the space between the presynaptic and postsynaptic membrane, है ना? Here we have basement membrane, which is required for the attachment of enzyme acetylcholinesterase, ठीक है? और it is used, मतलब it's required for the formation of this junction, neuromuscular junction, ठीक है? Now, postsynaptic terminal or postsynaptic membrane. So, the postsynaptic membrane is a depression in the muscle fiber, है ना? And here the sarcolemma is folded, so that the folds क्यों होते हैं? To increase the surface area, and acetylcholine receptors are present on these folds. Also, the voltage gated sodium channels are also present here, ठीक है? ठीक है? These are acetylcholine receptors और ligand gated channels, ठीक है? These are voltage gated sodium channels, ठीक है? Voltage gated sodium channels are present throughout the sarcolemma, ठीक है? These are, ये presynaptic membrane है. These are is it visible or not? These are calcium channels. These are vesicles, है ना? How does action potential propagate through the neuromuscular junction, ठीक है? So we have this postsynaptic axonal nerve, है ना? When action potential propagates in the motor neuron, what happens? What happens? We have voltage gated calcium channels here. The voltage gated calcium channels get open, ठीक है? When voltage gated calcium channel opens, it recruits the vesicles, acetylcholine containing vesicles on the presynaptic membrane. The vesicles get fused and acetylcholine gets released, है ना? Acetylcholine get attached to the acetylcholine receptors, ठीक है? Now these channels open through which both sodium and potassium can move, but the gradient for the sodium is more, so more sodium gets, क्या होगा सोडियम का? इनफ्लक्स और इफ्लक्स, हाँ? क्या होगा? जोर से बोलो. Influx of sodium is more as compared to efflux of potassium. So the potential is generated, है ना? And further the voltage gated sodium channels get open. Further action potential is generated and propagated throughout the membrane, right? And through the T tubules, and further calcium gets into the muscle and contraction happens.
This happens within the 5 to 10 milliseconds. क्या क्या हो रहा है? सबसे पहले क्या हो रहा है? Action potential through the axon propagates. Then what happens? Voltage gated calcium channels which are present on both the sides of the dense bar, where the vesicles are docked. Acetylcholine filled vesicles are docked. ठीक है? Those calcium channels get open. क्या होगा फिर? Influx of calcium. ठीक है? What this calcium will do? It will recruit the acetylcholine vesicles, right? And exocytosis will occur. Exocytosis होगा क्या होगा? Acetylcholine will get released into the synaptic cleft. ठीक है? This acetylcholine will get bind to the acetylcholine receptor, which are of nicotinic type. ठीक है? ना? Now this acetylcholine will bind to the acetylcholine receptors which are present on the postsynaptic membrane. ठीक है? Now what will happen? The influx of sodium is there, है ना? Now what this will do? This will depolarize the postsynaptic membrane, है ना? If the amplitude is enough for the propagation of action potential, है ना? The action potential will further propagate, है ना? And voltage gated sodium channels will open for the further depolarization of the postsynaptic membrane, which is membrane of, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. तो पोस्टसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या है? सार्कोलेमा. ठीक है? एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन विल टेक प्लेस. ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है इसमें, तो आपको ये सारे स्टेप्स पता होने चाहिए. यहाँ पे क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? एवरीबॉडी जो लिखा है बेटा वो तो बोल दो. ठीक है? नाउ नेक्स्ट स्टेप इज वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल गेट्स ओपन, है ना? फिर क्या हो रहा है? इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम. ठीक है? उसके बाद क्या हो रहा है? रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन. फिर क्या यहाँ पे फोर्थ स्टेप क्या है? बाइंडिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन टू द रिसेप्टर. ठीक है? नेक्स्ट इज then action potential, और फिर voltage gated sodium channel will open and further the action potential get propagated throughout the membrane. ठीक? बातें ही खत्म नहीं होती. वो भी इतनी जोर जोर से. Now what happened to this acetylcholine, है ना? हमने देखा था there is a enzyme present in the on the postsynaptic membrane which is acetylcholinesterase. Now this acetylcholinesterase will break acetylcholine into acetate and choline. This acetate gets diffused into the extracellular matrix of fluid and choline is reuptaken by the
by the, कहाँ जाएगा choline? Presynaptic membrane through choline transporter, and it is recycled. It is used to form new acetylcholine vesicles. ठीक है, हिंदी प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन. ठीक है, और जो वेसिकल्स फॉर्म्ड है उसमें क्या होगा, विद इन 20 सेकेंड्स दीज वेसिकल्स डिटैच फ्रॉम द प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन. एक्सोसाइटोसिस में कौन सा प्रोटीन, सॉरी एंडोसाइटोसिस में कौन सा प्रोटीन यूज हो रहा था? एंडोसाइटोसिस से क्लेथरीन पढ़ा था. ठीक है, तो these vesicles get detached from the presynaptic membrane and form the new vesicles. ठीक है, through endocytosis. अच्छा, why do we need to remove the acetylcholine from the synaptic cleft? If acetylcholine will be there, तो further क्या होगा, action potential होता रहेगा, है ना. Muscle will be in the which state? Remain in the contracted state. ठीक है, तो to relax the muscle we need to remove this acetylcholine from the cleft. ठीक है, और further जब action potential आए तो we need more new acetylcholine. So to form the new acetylcholine we need to remove this acetylcholine from the cleft. ठीक है, अच्छा, small vesicles है ना, तो each vesicle has a number of acetylcholine molecules, right, around 2000 on average, है ना. So when the muscle is in resting state or we are in resting state, है ना, at that time small amount of acetylcholine is keep on releasing from the motor end plate. At that time the action potential generated is known as miniature end plate potential, which is due to the release of a single vesicle of acetylcholine, right. मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल समझ में आया? आया नहीं आया? लग तो नहीं रहा आया है. एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, क्या फॉलो करता है एक्शन पोटेंशियल? ऑल और नन लॉ फॉलो करता है, नहीं करता? ठीक है, तो मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल में जो एम्पलीट्यूड है दैट इज नॉट इनफ टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल. ठीक है, लेकिन थोड़ा 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 एसिटाइलकोलिन इज बीइंग रिलीज्ड थ्रू आउट. ठीक है, और इसमें कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इज नॉट देयर. नाउ हमने देखा था कितने सेकंड्स में हो रहा था ये ट्रांसमिशन, 0.5 to 10 मिली सेकेंड. तो इस पूरा ट्रांसमिशन occurs in 0.5 to 1 millisecond. ठीक है, एंड इट्स अ ऑर्थोड्रोमिक प्रोसेस. ऑर्थोड्रोमिक मतलब फॉरवर्ड जाता है, बैकवर्ड नहीं जाता है. इट्स अ ऑर्थोड्रोमिक प्रोसेस विच ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन टू फॉरवर्ड. ठीक है,
an amount of neurotransmitter released from vesicles will be directly proportional to the calcium influx. जितना calcium influx होगा उतना neurotransmitter release होगा, right?